Okay, students, so the question is, if in an infinite geometric progression, the sum of the squares of all the terms equals twice the square of sum of all the terms, then find the common ratio of the progression. अब नॉर्मली स्टूडेंट्स हमारा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है वो इस तरीके से होता है ना, जीपी इज लाइक ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो यहां वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स इनफाइनाइट जीपी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द टर्म्स। नाउ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द टर्म्स, तो अगर मैं हर एक टर्म के स्क्वायर का सम निकालूं तो हर एक टर्म का स्क्वायर करूंगा तो स्टूडेंट्स विल गेट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर r to the power 6 and so on. Now this is sum of squares of all the terms. Now this is equal to twice of square of sum of all the terms. तो सारे terms का जो sum आ रहा है स्टूडेंट्स, मतलब a plus ar square and so on, इन सब का जो sum आ रहा है उसका square. Now they are equal to each other. अब स्टूडेंट्स यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, sum till infinity in a GP. The formula is a upon 1 minus r, where a is the first term, r is the common ratio. तो कहने से स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में जो सीरीज है, राइट, वो भी एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, और इनफाइनाइट टर्म्स के लिए सम निकालना, वील यूज दिस फॉर्मूला, बट द ओनली डिफरेंस इज द फर्स्ट टर्म नाउ इज a square. So we'll get a square divided by 1 minus, common ratio is r square, so we'll get a square upon 1 minus r square, and this is equal to 2 times. Now students, again using this formula, a upon 1 minus r, so we'll get twice of a upon 1 minus r का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, राइट। सो फाइनली वील बी लेफ्ट विद 1 upon 1 minus r square. Now this is equal to 2 upon 1 minus r का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सबको फॉर्मूला आना चाहिए। 1 माइनस आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 minus r square can be written as 1 minus r into 1 plus r, and this is equal to 2 upon 1 minus r का whole square, which eventually becomes 1 minus r into 1 minus r. तो आप देखिए 1 minus r भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ। now let's cross multiply students, so we'll get 1 minus r is equal to 2 times 1 plus r, which is 2 plus 2r, and this means 3r is equal to 3 times r is equal to minus 1. That means r is equal to minus of 1 by 3. So students, r is equal to minus 1 by 3 will be the correct answer, which is option 1. I hope this question is clear to everyone.